ओके, तो सी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने के लिए हम लोग फर्स्ट शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लिए हम लोगों को पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज जानना चाहिए। कंप्यूटर अगर देखा जाए तो दो चीज में बांटते हैं, एक है सॉफ्टवेयर पार्ट, दूसरा है हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट क्या करता है? हार्डवेयर पार्ट, it will do all the physical work that the computers are known for. It will do all the work. And what will software part do? It will command the hardware कि what to do and how to do. So सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड करता है कि क्या करना है एंड कैसे करना है, और हार्डवेयर क्या करता है? इट डज द एक्टिविटीज, वो सिर्फ करता है, राइट? सो इफ वी डील कंप्यूटर एज अ लिविंग बॉडी, देन हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर विल बी द बॉडी that does the thing, like seeing with eyes, lifting with arm, etc. और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर विल बी द इंटेलिजेंस which will help in interpreting the images that are seen by the eyes. eyes देखता है, पर eyes को इंटरप्रेट करके ये पिक्चर माउंटेन का है, ये पिक्चर रिवर का है, ये सॉफ्टवेयर करेगा, राइट? एंड सपोज हार्डवेयर हाथ से किसी सामान को उठाता है, पर हाथ से इस सामान को उठाना है, ये इंस्ट्रक्शन ये सॉफ्टवेयर देगा हार्डवेयर को। ठीक है, सो हार्डवेयर विल डू ऑल द एक्टिविटीज, विल डू ऑल द वर्क, एंड सॉफ्टवेयर विल कमांड द हार्डवेयर what to do, how to do, when to do. Fine. Now since computer uh, hardware, it's a digital machine, so it can only understand two basic states. One state is on, another state is off. Fine. Now, this computer software, it was developed to make efficient use of this binary system. That means ये जो 0 and 1 ऑन एंड ऑफ का जो लॉजिक है, इसका एफिशिएंट यूज, ये तो बाइनरी सिस्टम है हम लोगों का, 0 and 1 2 टाइम्स, तो इसका यूज करके, इसका एफिशिएंटली यूज करके हम कैसे हार्डवेयर पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन दे ताकि हार्डवेयर पार्ट्स मेरा मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करे, इसके लिए तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है एक के बाद एक। सो कंप्यूटर हार्डवेयर, इट कैनॉट थिंक एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. So hardware part can never be used to analyze a given set of data and to find a solution on its own. It cannot do that. So hardware will always needs a software, that is a set of programs to instruct what has to be done. So hardware software के बिना काम नहीं करेगा, है ना? प्रोग्राम क्या है? What is a program? प्रोग्राम क्या है? Program is a set of instructions, right, that are arranged in a particular sequence in order to guide a computer to find a solution for a given problem. Now, this process of writing a program is what we called programming. So, program is the set of instructions which are written in a sequence order in order to give a solution to a problem. And programming is the process of writing the program, is what we call programming. Now, this computer software, it is written by computer programmers using certain programming languages. Now, this programmer, they write the program using a specific programming language.
कभी प्रोग्राम हम सी में लिख रहे हैं, कभी प्रोग्राम हम जावा में लिख रहे हैं, कभी प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, कभी हम पाइथन में लिख रहे हैं. So these are programming language, different programming language, right? But the program, the instructions which are written in any programming language, that is known as source code. Okay. Now, there is another computer program, that is compiler is used. You will see that हम लोग compiler इसका बहुत compile करो, program compile करो, एक compiler है, इस ये term बहुत बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? Compiler is used, it will transform this source code into a language that the computer will understand. Now, suppose in your class you are using the Dev C++ compiler. There you are writing the codes, your source code in the form of C language. Using the C language, you are writing the source code. In the source code, you will see a lot of functions are there, English writings are there. So computer will not understand these English writings, right? Computer will only understand 0 and 1. We all know that. So compiler is that program that will change this source code into a language that the computer can understand. And the result is an executable computer program, right? Fine. So source code से वो एक executable computer program में change करता है compiler. It does this work. Source code एक language में है, उसको computer की भाषा में change करना है, right? If you talk about example of computer softwares, we know a lot of softwares nowadays, right? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, मेरा ओएस एक सॉफ्टवेयर है. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट? नाउ सो computer system, it got dissected in hardware and software. सॉफ्टवेयर में भी टू टाइप्स ऑफ है. एक होता है हम लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम, हम लोग अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं. पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट विल प्रोवाइड अ जनरल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट in which the programmers, they can create the specific applications according to their need. Environment कैसे प्रोवाइड होगा? एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे वो लोग न्यू फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, सपोज व्हाट्सएप मेरा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो व्हाट्सएप मेरे को तो विंडोज में भी चलता है, ओएस में भी चलता है ना? तो OS Windows क्या है? These are all platforms, these are all environments where you run your application programs. जैसे मेरा बहुत सारे application programs है, WhatsApp ले लो, फोन पे ले लो, everything is application program. So system software, it will represent the programs that allow the hardware to run properly. So it acts as an interface between the hardware and the user. So the user and the hardware of the computer, in between there is system software. So OS, हम लोगों का जो OS है, हम लोग जो देखते हैं ऑन करके, कभी उबुंटू देखते हैं, कभी लिनक्स में देखते हैं, कभी विंडोज पे देखते हैं, these are all our OS. This is also a software.
दीज आर ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा हार्डवेयर पे जो काम हो रहा है और हम जो यहाँ पे बैठे हैं उसके बीच एक इंटरफेस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करके उसके ऊपर हम लोग अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, उसको चलाते हैं। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी क्या है, अभी बोले ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर यूजर्स। हम लोग तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बनाया जिससे हम लोग वर्ड का एक्सेल का काम करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप बनाया, हम लोग फोन पे बनाए, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए। सो दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अगर हम लोग हायरार्की देखें, सबसे नीचे तुम्हारा है क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर एकदम भीतर है। उसके ऊपर तुम्हारा क्या है, हार्डवेयर से ऊपर उठ के सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो तुम देखते हो अपना विंडोज, अपना उबुंटू, अपना लिनक्स, ये सब। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग बहुत तरीके के एप्लीकेशंस चलाते हैं, फाइल्स चलाते हैं। दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितना भी सॉफ्टवेयर है हम लोग जो यूज करते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कौन करता है, यूजर। यूजर 1 2 ऐसे करते करते यूजर्स, है ना। सो तुम ध्यान दो, यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर भी डायरेक्ट यूजर को आंसर नहीं भेजते हैं, है ना। तो बीच में ये आता है हमारा ओएस, जिसमें हम सारा डिस्प्लेस देखते हैं, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। So this is the entire hierarchy. Okay. So system software, it is designed to operate the computer hardware and to provide and maintain a platform for running the application softwares. Okay. अच्छा, अभी कंप्यूटर बायस क्या है, और डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, ये भी जानते हैं थोड़ा। ये ड्राइवर वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, हम लोग सुनते हैं ना, ये क्या है। ये जो दो चीज है, दे विल प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी to operate and to control the hardware that is connected to the computer or built into the computer. They will control all the they operate operations and all. Bias क्या है, bias का meaning है basic input output system. ठीक है, this is built into the computer. That is, BIOS is the first code that is run by the computer when the computer is switched on. So, key role of BIOS क्या है, हम लोग जब CPU में वो बटन प्रेस करते हैं, it will load and it will start the OS. So, the key role of BIOS is it will load and start the OS. Fine. So when the computer starts, the first function that the BIOS will perform is to initialize and identify the different system devices. कंप्यूटर जब इनिशियलाइज होगा, स्टार्ट होगा, मेरा कीबोर्ड स्टार्ट होगा, माउस स्टार्ट होगा, हार्ड डिस्क स्टार्ट होगा, सीडी डीवीडी ड्राइव स्टार्ट होगा, बहुत सारा चीज स्टार्ट होगा. So the function of BIOS is to initialize, identify and start the system devices. These all system devices. And to ensure that the system devices are working correctly. आप देखना, अगर आप आपका माइक्रोफोन ठीक नहीं है, आप कंप्यूटर ऑन किए, तभी आपको एक एरर देगा कि योर माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, कुछ एरर देगा, योर दिस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. तो बायस का काम ही यही है, वो चेक करना कि
मेजर करना कि सिस्टम जो डिवाइसेस है दे आर वर्किंग करेक्टली और नॉट, और उसको करेक्ट है तो उसको ऑन करके इनिशियलाइज कर दो. So BIOS will locate the software which is held on a peripheral device. Suppose hard disk या CD, उस पे कोई सॉफ्टवेयर है. हम लोग फॉर्मेट कैसे करते हैं? हम लोग विंडोज एक पेन ड्राइव में लिए, हम लोग मशीन फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? बोलते हैं ना मशीन को फॉर्मेट करेंगे, ये वो कैसे करते हैं. हम लोग एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाए, उस पर विंडोज भर दिए. बायस जब स्टार्ट होगा हम लोग एक की प्रेस करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पेन ड्राइव से बूट करो मशीन. So BIOS will also locate the software that is held on peripheral devices. हार्ड डिस्क में, सीडी में, पेन ड्राइव में, पेरिफेरल को भी लोड करते, and it will load and execute the software, giving it control of the entire computer. Now this is called booting. This is the meaning of the word booting, which you will heard. Okay. Now to summarize this, what the BIOS performs. What does it performs? It initializes the system software. It initializes the system registers. It will initialize the power management system. It will test the RAM. It will test the RAM. It will test all the serial and the parallel ports that are there. हम लोगों का पास बहुत पोर्ट है. एक पे हार्ड डिस्क पेन ड्राइव घुसाते हैं, एक पे चार्जर का पिन प्लग घुसाते हैं, एक पे लैन का केबल घुसाते हैं. So it will test all the serial and the parallel ports. It will initialize the CD drive, the DVD drive, hard disk controllers, everything, and it will display the system summary information. These are all the BIOS that performs. Now, let's talk about the OS, the operating system. Now, the primary goal of OS क्या है? Is to make the computer system convenient and efficient to use. मेरे पास, हम लोग जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हम लोग के पास ये विंडोज का स्क्रीन आता है, उस पे हम लोग सारा अपना काम करते हैं. अगर ये स्क्रीन आता ही नहीं तो हम लोग काम कहाँ पे करते हैं? हम लोग थोड़ी ना हार्डवेयर पे जाके समझ के आता है. तो हम लोग के लिए कॉन्वीनियंट हो जाता है ना, एफिशिएंट हो जाता है. अब मेरा जो यूज है, दिस यूसेज बिकम्स एफिशिएंट फॉर अस. ओके. सो ओएस का सुविधा क्या है, उसका गोल क्या है? हम मेरे को जो मेरे इट विल मेक द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, एंड it will be efficient for us to use. So OS will offer services to support the different user applications. We are using C++, we are using Microsoft, we are using this, that. So these all applications which are there, OS needs to support this, right? So that's why whenever you will download a software, you will see download for which OS, for Windows, for Ubuntu, for this and that. So OS will support these user applications so that users should find it easy to launch an application and work on it. So the interface, it will hide a lot of details of the instructions that perform all these tasks. So we as users, we simply press the button to perform the input operations regardless of the complexity of the details which are involved. So OS ensures that the system resources is used efficiently. OS have a control policy and algorithms which they use to allocate the different system resources. So we won't be entering so much into that. So this is just an overview of what the OS does, what is the meaning of the word BIOS is, what device drivers does, and all that. Now we will move on to the next section. Now we will talk about different things.
First, we will talk about compiler. So what is a compiler? It's a type of program that will transform our source code. We have a source code written in some programming language, be it C, Java, C++, anything, into the machine language, that is 0 and 1. So the resultant code in 0 and 1, this is known as object code. And the object code is used to create an executable program. So the code in 0 and 1, it's known as object code. पहले source code को लिए, source code को object code में transform किए, and object code से मेरा एक executable program बनता है जो execute करके हमको आउटपुट देता है. अगर सही है तो आउटपुट देगा, गलत है तो कुछ एरर्स बताएगा, उसको ठीक करने से आउटपुट देगा. So this compiler, it is used to translate our source code from a high level programming language to a lower level language. So zeros and ones machine language is a lower level language, we all know that. So it can locate the syntax errors in the program but cannot fix it. तुम लोग जब प्रोग्राम रन कराते हो, वो प्रोग्राम कहाँ पे गलती देता है वो लोग रेड करके दिखाते हैं, पर वो फिक्स करके नहीं दे पाता है, तुम्हें वो फिक्स करना होता है. So it will locate, once your program is compiled, it will locate the syntax errors in the programs, but it cannot fix it. So until and unless the syntax errors are rectified, the source code cannot be converted to object code and it cannot be give rise to an executable program. Okay, so this is what the compiler does. Now what is the work of interpreter? So interpreter, it will translate the instructions into an immediate form which it then executes. That is, it will interpret the source code line by line, whereas the compiler will compile the entire code in one go. So there is a difference between interpreter and compiler, and the difference is very thin. Whenever you run the programs, I say that compile it. That means the compiler, it will compile the entire code in one go. And it will give you that there are errors in line 13, 14, and 16, like this. But the interpreter, it will interpret the source code line by line. That means that एक line execute किए, उस पे problem है, तो वहीं पे रुक जाना है, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. तो ये इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या था, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, उसमें पूरा प्रोग्राम एट वन गो कहाँ पे एरर है वो एरर एटलीस्ट नहीं बताएगा, कहाँ पे प्रोबेबल एरर्स है लाल करके हाईलाइट कर देगा. इंटरप्रेटर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा, फर्स्ट लाइन पे जहां पे वो एरर मिलेगा वो वहां पे स्टॉप कर जाएगा. अगर उस लाइन को हमने ठीक किया, फिर से नेक्स्ट लाइन पे जहां पे एरर है फिर से स्टॉप कर जाएगा, उस लाइन पे जहां फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे जहां पे है उस पे ही स्टॉप कर जाएगा. सो दोनों का ही इन अ वे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है ना. लाइन बाय लाइन भी कभी कभी एडवांटेज होता है, एट अ गो सारा एरर्स मिल जाने से भी एडवांटेजेस होता है. ठीक है, ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिंकर का. व्हाट डज अ लिंकर डू? सो द लिंकर विल कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स in order to form an executable program. So in case of a large program, the programmer will prefer to break a code into smaller modules because this will simplify the programming task. सपोज एक कैलकुलेटर का अगर प्रोग्रामिंग करते हो, देखना एक फंक्शन वो लोग बनाएंगे मैथमेटिक्स एडिशन का, एक फंक्शन बनाएंगे सब्ट्रैक्शन का, अलग फंक्शन बनाएंगे डिवीजन का, अलग से एक फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का. सो इट विल break the code into smaller modules because this will simplify the programming task.
So when the source code of all the modules has been converted into object code, that means they have been compiled. So then we need to put all the modules together. And this is the job of the linker. So usually the compiler, it will automatically invoke the linker as the last step in compiling any program. Okay. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोडर का. So loader is a special type of program. It will copy programs from a storage device to the main memory, that is where they can be executed by the CPU. है ना? So these are the various concepts which are related to the system software. Fine. Then the compiler, interpreter, linker, loader, इसका काम क्या है? हम लोग जो बोलते हैं कंपाइल करो, ये करो, वो करो, करता क्या है इसके बारे में. So next is the application software. So application software के बारे में और क्या ही बोले, everything is application software. Microsoft Word ले लो, WhatsApp ले लो, Facebook ले लो, Google ले लो, PhonePe ले लो, सब कुछ ये application software है ना. नेक्स्ट आता है जिसपे सी स्टार्ट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो अप टू नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. नाउ स्लोली वी विल एंटर इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड in order to express the computations that can be performed by the computer. So C is a language, COBOL is a language, C++ is a language, Java is a language. Now, every set of language has a unique set of keywords. हम लोग अगर English को ही ले लेते, English is a language, it has certain distinctions. जब भी कोई सेंटेंस का शुरुआत होगा एक कैपिटल वर्ड से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, किसी भी सेंटेंस खत्म होगा उसके लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा, किसी भी चीज एक के बाद एक होता जा रहा है उसके कॉमा देके देके लिखता है. कभी अगर सपोज द सन्स, मतलब वो बेटा का बैट अगर बोलते हैं द सन्स बैट, सो वी विल राइट SON apostrophe S. तो पैराग्राफ करना है, ये करना है. सो एवरी लैंग्वेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? सिमिलरली सी विल आल्सो हैव अ यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स, है ना. हम लोग कीवर्ड्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखो ना, आप, एबव, ऑन, बिफोर, आफ्टर, सब कीवर्ड्स ही तो है, वर्ड्स है. सो लैंग्वेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड इट विल ऑलवेज हैव स्पेशल सिंटैक्स for organizing the program instructions. इंग्लिश लैंग्वेज का भी जैसा एक सिंटैक्स है, हम लोग उस सिंटैक्स से बाहर जाके नहीं लिख सकते. हम लोग पहले राउंड को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लगाते हैं, वर्ब के लगाने के बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं. हम लोग पहले एडवर्ब, लास्ट में नाउन, फिर बीच में एडजेक्टिव, थोड़ी ना ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. वी फॉलो अ सर्टेन रूल्स, राइट? वी फॉलो सर्टेन वर्ड्स. एवरी लैंग्वेज हैज दैट. सी विल आल्सो हैव दैट. Then comes what? Then comes the generation of the programming language. C कहाँ से आया? बस C कौन सा लैंग्वेज में पढ़ता है? These programming languages, these are the primary tools of creating the software. Now 4 generations of languages was there. First was the machine language. मतलब 0 1 जो machine language है. एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि कोड बहुत फास्ट रन करेगा, एफिशिएंटली रन करेगा, बिकॉज इट्स डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू. पर एक डिसएडवांटेज है, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर इट इज डिफिकल्ट टू एडिट इफ एरर ऑकर्स. 0 1 सपोज तुम देखो ना, ये नंबर 45, इस नंबर को अगर 0 एंड 1 में बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, 45 ज्यादा इजी है याद रखने का या 0 1 ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली 45 इज मोर इजी टू रिमेम्बर. सो machine languages are very hard to remember and very hard to debug. So this was the first generation language. Next, a better version came, which I think electrical and electronic students are especially aware of.
This is called the assembly language. It's a low level language. It is used, they used mnemonic codes such as सपोज एक्स बोल के कोई रजिस्टर है, इसमें 4 वैल्यू डालना है, तो हम लोग लिखेंगे एमओबी मूव एक्स कॉमा 4, मतलब 4 एक्स में चला जाएगा। सपोज बी एक्स बोल के कोई रजिस्टर है, उस पर 6 डालना है, तो हम लोग ये कोड चलाएंगे, ठीक है। फिर दोनों रजिस्टर का ऐड करना है, तो हम लोग ये कोड चलाएंगे, है ना। So these are all fixed keywords for this assembly language, है ना। So next came the generation of assembly language. So the programs written in this language, they needed an assembler. Same way assembly language तो कंप्यूटर को पता नहीं है, इसको फिर से 0 1 में कन्वर्ट करना है. So that was the work of the assembler, to convert this program in the assembly language into the language the computer can understand. ठीक है. स्टिल इस पे इम्प्रूवमेंट चाहिए था. बेसिक बेसिक काम हो सकता है, बहुत सारा काम नहीं हो सकता है ना. इसके बाद आया, एक सेकेंड 1 मिनट, इसके बाद आया मेरा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. Now this third generation language is where the C lies. They have made it easier to write and debug problems. The first best application of third generation language is, तुम C का लैंग्वेज देखो, C का प्रोग्राम देखो. C प्रोग्राम तुम लिनक्स में एग्जीक्यूट करोगे, सेम सेट्स ऑफ कोड्स है. C प्रोग्राम तुम विंडोज पे एग्जीक्यूट करोगे, कोड मेरा सेम है. ऐसा नहीं है कि C का इफ कोड का लॉजिक और इफ कोड का लिखने का पैटर्न लिनक्स में अलग है और विंडोज में अलग है. नेवर. So that means the programs are portable between the machines. Now this is where the C started lying. Fine. Next came the 4GL, the fourth generation language. Fourth generation language is what? It's a non-procedural language. C is a procedural language. Next came the non-procedural language. That means it will more concentrate on what is to be done instead of how is to be done. One example of procedural language is SQL. We learned that in our database management system subject. You will learn that SQL, structured query language. So next came 5GL, fifth generation language. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जांपल अगर हम ले तो विजुअल बेसिक है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, प्रोलॉग है, लाइक दिस. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ लैंग्वेज. फाइन. So in 1990s, the fifth generation language, they are considered to be the wave of the future. Okay. So this was all about the introduction to programming. I hope you have understood it. In the next video, we will start from introduction to C.